कुछ जो है भावनिक ऐसा उसको प्रतिसाद होता है, वेदना का प्रतिसाद होता है। And there's an interpretation of what's going on. और उसके पश्चात जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में हम हमारी जो बात है वो बताते हैं। Then there's an emotional response, you could say, or response of the will. और उसके पश्चात हमारा भावनिक प्रतिसाद उसको आता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं हमारे इच्छाओं का प्रतिसाद आता है। And it's all conscious. और फिर सभी बातें जो होती हैं वो एक प्रकार से सचेतन होती है। That's experience, yeah? तो इसको अनुभव कहा गया है। So experience, in the mundane sense, ordinary experience is always interpreted. तो लौकिक अर्थ से या व्यवहारिक अर्थ से जो भी हमारा अनुभव होता है वो हर समय अभी यहाँ पर इंटरप्रेटेड का अर्थ चाहिए, कोई देख सकता है कि हाँ? नहीं तुलना। There's always a story that explains. तो वहाँ पर हमेशा हम कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। But that story is going to be bound up with certain understandings. और ये जो कहानी हम बताते हैं वहाँ पर वो जो कहानी है किसी निश्चित समझ के साथ जुड़ी होती है। So for instance, it's going to be bound up with the understanding that we're on a retreat, we're studying the Dhamma. तो एक प्रकार से वो इस प्रकार से वो उससे बंधित हो सकती है कि हम यहाँ पर शिविर में हैं, हम धम्म का अभ्यास कर रहे हैं। That's a view that we all share, that we're engaged with, yeah? तो इस प्रकार से ये दृष्टिकोण है जिसमें हम सभी सहभागी हैं, हम एक साथ उसको शेयर करते हैं। It goes further than that. ये बात इससे भी और आगे बढ़ती है। Caste is a kind of view. तो जो जाति है वो भी एक प्रकार की दृष्टिकोण है। Even nationality is a view. राष्ट्रीयत्व भी एक प्रकार से दृष्टिकोण है। You see what's happening in India at the moment, all this battle over what nation is, what nationalism is, yeah? तो भारत अभी इस प्रकार के संघर्ष में है कि कौन किस प्रकार के राष्ट्रीयत्व होता है। Well, that's all to do with views. तो ये सारी बातें जो होती है वो दृष्टिकोण से संबंधित होती है। And the deeper views about the meaning of life. वहाँ पर हमारे जीवन का गहरा अर्थ भी होता है। Whether life is eternal, life is fixed. ये हमारा जीवन जो है वो पक्का है या सनातन है। And there's views about self. हमारे स्व के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण होता है। Those are the most fundamental ones. तो ये बहुत ही मूलभूत ऐसे दृष्टिकोण है, दृष्टि है। So always, whilst you're unenlightened, there will be views. तो जब तक आप अबुद्धत्व या अप्रबुद्ध हो तब तक आपके दृष्टि होंगी, आपके दृष्टिकोण होंगे। That's why it's so important to study the Dhamma. और इसलिए धम्म का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। Because you become clearer about the Dhamma view, you become clearer about Sama ditthis, Samyak drishti. क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है या धम्म है उसके बारे में और आप अधिक स्पष्ट होते हो। And then you can look at the views that you have. और फिर जो भी दृष्टि आपकी है उसको आप देख सकते हो। Otherwise, if you don't look at them, they just stay there in the background. अगर उन दृष्टि को आप नहीं देखोगे तो आपके पृष्ठभूमि में वो वैसे ही रहेगी। They're like the operating system that the computer works on. तो जिस प्रक्रिया पर या यंत्रणा पर कंप्यूटर चलता है वो उसी प्रकार से होती है। So you could say through study you update your operating system. तो अभ्यास के माध्यम से आप ऐसा कह सकते हो कि जिस प्रकार की आपकी यंत्रणा चलती है उस यंत्रणा को आपने फिर से नया बनाया है। And particularly you get a very good antivirus program. और सबसे अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए। Because views are like viruses. Yeah? क्योंकि ये जो दृष्टि होती है बिल्कुल वो वायरस की जैसी होती है। They infect the atmosphere. और वो पूरे हमारे वातावरण को क्या बोलते हैं इसको नहीं इन्फेक्शन को दूषित कर सकती है। Yeah, and you get these ideas without even realizing them. और कभी-कभी हमें समझ में आने के पहले ही हम ये सारी कल्पनाएं हमें आ जाती है। Of course, you can
deliberately take on right view. निश्चित रूप से आप जानबूझकर जो सही दृष्टिकोण है, सम्यक दृष्टि है, उसको ले सकते हो। You can deliberately interpret things in terms of the Dhamma. आप जानबूझकर सारी बातों को धम्म के माध्यम से उसका अर्थ लगा सकते हो। इंटरप्रिटेशन इज अर्थ लगाना, अर्थ बोलना। Artha lagana. Yeah. अर्थ लगाना, अर्थ Meaning. बोलना। Yeah. So yes, you can interpret things from the point of view of the Dhamma. तो धम्म का फिर बाकी चीजों को आप धम्म के अर्थ से उसको आप देख सकते हो और धम्म का अर्थ लगा सकते You know, things arise in dependence on conditions. हो। हर एक बात जो है वो संस्कारिकता पर निर्माण होती है। Everything's impermanent. हर एक बात जो है वो अनित्य है। In this conditioned realm, dukkha is inevitable. और इस संस्कारित अस्तित्व में दुख अनिवार्य है। And so on. और इस प्रकार से So yes, you interpret things from the point of view of the Dhamma. That's right view. तो धम्म के माध्यम से आप बातों को अर्थ लगाने का प्रयास करते हो और इसी को योग्य दृष्टि कही गई है। But the Buddha has no views. किंतु बुद्ध का कोई दृष्टि नहीं होती, दृष्टिकोण नहीं होता। Because if you're in touch with the nature of awareness, you don't need a view to interpret. अगर आप सही में जो भी सत्यता है उसके स्वभाव के संपर्क में है तो आपको उसको जताने के लिए, दर्शाने के लिए किसी व्यू की दृष्टि की जरूरत नहीं होती। You can use language. आप शब्द का इस्तेमाल कर, भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो। Because that's a convention that we have amongst us, yeah? क्योंकि एक प्रकार से वो व्यवहारी ऐसी बात है जो हमारे बीच में है। But you do not have a view that's connected with that language. लेकिन उस भाषा से संबंधित आपका कोई भी दृष्टिकोण नहीं होता। Akasha Shuri is further. Yeah, because your experience, say on the highest level, would I can't use the word few now, can I? Your experience your experience will tell you the view behind the experience. You see what I mean? Well, not really. Sorry, go on. तो वो कहते हैं कि आपका जो अनुभव है वो अनुभव आपको उस अनुभव के पीछे क्या दृष्टि है वो दर्शाता है, बताता है। Yeah, so you wouldn't be interpreting your experience unless it was useful to do so. तो आपके अनुभव को फिर इस प्रकार से आप अर्थ लगाने का प्रयास नहीं करोगे अगर जब तक वो सही में उस तरह से बताना उपयुक्त नहीं हो तब तक। That's not the point you're making. No, but in a way, maybe you said it already, to give it words afterwards helps almost the integration of the experience. In some ways it may do, yeah. तो वो कहती है कि अगर इसको आप उसके अनुभव के बाद में अगर शब्द लगाते हैं या उसको शब्द देने का प्रयास करते हैं तो शायद integrate the experience, yeah. तो शायद उससे फिर आपका जो अनुभव है वो और अधिक समग्र या एक रूप बन जाएगा। So the example you can think of is at the Bodhi tree, the Buddha had the experience of complete freedom from views. Yeah. तो बोधि वृक्ष के तले आप उस अनुभव को इस तरह से देख सकते हैं कि बुद्ध को दृष्टिकोण से पूर्णतः मुक्ति मिली थी, दृष्टि से मुक्ति मिली थी। And then he, according to the later story, he walked up and down the Ratna Chankraman. तो जो बात की जो कथा उनके बारे में बताई जाती है उसमें यह कहा गया है कि उसके बाद उन्होंने आगे पीछे परिक्रमा करना शुरू किया जिसको रत्न परिक्रमा, yeah. रत्न परिक्रमा कहते हैं। You know, if you're going round past the tree, just as you turn the corner, a row of lotuses. तो जैसे आप परिक्रमा करते समय दक्षिणावर्ती दिशा से जब गुजरते हो तो आपको 7 जो चरण है वो वहाँ पर दिखते हैं।
And that's said to be where the Buddha walked up and down, sort of digesting his experience. Yeah? तो ऐसा कहा गया है कि बुद्ध वहाँ पर आगे पीछे परिक्रमा करते थे ताकि उनके अनुभव को वो पचा सके, उसका पचन कर सके. And it's traditionally said that he put it in terms of pratitya samuppada. Yeah? और पारंपरिक रूप से ऐसा कहते हैं कि उन्होंने उनका अनुभव जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में रखा. Bhante says he thinks that the Buddha's time at the Mahabodhi temple area should be seen in terms of him gradually coming to terms with and sort of allowing to filter all the way through the experience he had under the tree. Yeah? हमने जो भी समय उन्होंने वहाँ पर बिताया है महाबोधि के विहार के इर्द गिर्द, उसको हमने ये देखना चाहिए कि वो एक प्रकार से उस शब्दावली को या उस अनुभव की शब्दावली तक पहुँचने का प्रयास कर रहे थे और उस अनुभव को पूरी तरह से अपने अंदर उसको छानने का प्रयास कर रहे थे. So yes, you could say that the reflection in words helps to integrate the experience. Yeah. ऐसा के ऊपर सोचना एक प्रकार से आपके अनुभव को और एक रूप बनाता है, समग्र बनाता है. And especially helps you to communicate it to others. और खासकर दूसरों को वो बताते समय उसका उपयोग होता है, मदद होती है. It's interesting this question of the ashrava kshaya. बात जो है उसको देखना आश्रव ज्ञान में बहुत रोचक है. Of course, there's the destruction of the ashravas. Yeah. निश्चित रूप से वहाँ पर आश्रमों का नष्ट करना है. But as if that's not enough. Yeah. लेकिन उतना ही नहीं है. You have to know that they're destroyed. Yeah. आपको ये जानना जरूरी होता है कि वो अभी नष्ट हुए हैं. That knowledge isn't a knowledge in concepts. तो ये जो ज्ञान है फिर वो ज्ञान शब्दों का या संकल्पनाओं का ज्ञान नहीं है. But sometimes those concepts may help one to gain that knowledge, if you see what I mean, or to express or arrive at that knowledge. तो कभी-कभी जो शब्द होते हैं या संकल्पना होती है फिर उस ज्ञान के प्रति या उस ज्ञान तक आने के लिए हमें मदद कर सकती है. Does that make sense? I mean, insofar as we can make sense of what's completely beyond our experience, but तो ये जो बात है वो पूरी तरह से हमारे अनुभव के परे है, फिर भी कुछ हद तक उसका हम कुछ भाव लगाने का प्रयास कर रहे हैं. समझ मेरे मन हुआ जैसे उदाहरण कहते हैं उदाहरण आता है ब्रेन और माइंड का उसका कंसर्न नहीं होता है कुछ. कौन से मान का? अपना मन आ रही है इससे कुछ संबंधित है. When Buddha means he utters utterance, the Buddha's utterance, they are spontaneous, comes Yes. spontaneously. Yeah. So whether they well, the Buddha is still has a human existence. Yeah. तो बुद्ध का एक शांति मनुष्य करके भी अस्तित्व है. So clearly, you know, the whole mechanism is involved. Yeah. तो वहाँ पर सारी जो यंत्रणा है वो वहाँ पर सम्मिलित है. Otherwise, you know, how does the word come out of his mouth? Yeah. शब्द जो है उनके शब्द मुंह से कैसे बाहर आएंगे? But it's as if what he says, doesn't he, under that Nigroda tree, that he is going to live revering and relying upon the Dhamma. If the brain and the tongue and so forth are all in the service of the Dhamma. ये जो मस्तिष्क है या उसकी जीवा है वो सारी की सारी धम्म की सेवा में है. Yeah. I was thinking a little bit about that. What Bhante wrote about his time at Nagpur in 1956. तो मैं उसके बारे में बात कर रहा था, सोच रहा था जिसमें भंते जी ने अपना जो समय है 1956 में नागपुर में बिताया है. Do you remember he wrote to his friend Dinu Dubash afterwards? Yeah. तो आपको पता होगा कि उन्होंने उसके बाद अपने मित्र दिनो दुबाश को खत लिखा था. And he says his whole experience of that time was quite remarkable, extraordinary.
तो वो कहते हैं कि उनका वहाँ का सारा जो समय था बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही आश्चर्यजनक था। He said he felt as if he was an impersonal force. तो वो कहते हैं कि वो स्वयं एक प्रकार से पारलौकिक ऊर्जा में थे। In other words, it wasn't will that was operating. वहाँ पर उनकी इच्छा काम नहीं कर रही थी। And he said sometimes he'd be giving talk after talk after talk. वो कहते हैं कि कभी-कभी तो उन्होंने एक प्रवचन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रवचन दिया। They're just going from basti to basti, just talks. और अलग-अलग बस्तियों में एक के बाद एक वो जाते गए। Just trying to rally Baba Saheb's stricken followers. तो जो भी दुखी बाबा साहब के अनुयायी थे उनके लिए वो what's the rally? Rally? What did you say? Trying to inspire them. Yeah. तो लोगों को प्रेरित, दुखी लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रयास कर रहे थे। And he said that sometimes he was giving talks without any thought. और उन्होंने कहा कि कभी-कभी तो किसी भी विचार के बगैर उन्होंने प्रवचन दिया। He said it was as if he was in meditation. Yeah. उन्होंने कहा कि मानो वो एक प्रकार से वो ध्यान में है। And the words would just spontaneously come out. और शब्द जो है वो स्वाभाविक रूप से सहजता से उनके मन से आ रहे हैं। And they were exactly what people needed to hear. और वो शब्द उस प्रकार के थे जो लोगों को सुनने के लिए आवश्यक थे। And he said that when he left, he realized that even though he'd been exerting himself tremendously, उनको याद है कि वो कहते हैं कि ये सारी बातें उनको बहुत थका रही थी। he felt completely refreshed. लेकिन फिर भी वो बिल्कुल ताजे तवाने थे। So maybe it's a little bit of a hint of what it must be like. Yeah. तो यहाँ पर कुछ थोड़ी हिंट होगी कि ये अनुभव किस तरह का हो सकता है। You're not thinking in the ordinary sense. यहाँ पर आप सर्वसाधारण रूप से विचार नहीं करते हो। There's just an immediate responsiveness. लेकिन वहाँ पर तुरंत ऐसा